Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. कौन चालू ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଡନ ଡାଇମଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ କରିବେ କଣ ତାକୁ ସେ କାଲି ରଶ୍ମି ସାର୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ସରୁ କ୍ଲାସ ସରୁ ମୁଁ କହିବି କଣ ଗୋଟେ କରିକି କରୁଛି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ I don't know it is working or not. After class ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ତ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଟା କାମ କରୁଛି ବଟ୍ ଏଟା recording option is failure. Okay, very good morning to all. My my voice is audible. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Previously we discussed or related the theorems, KCL, KVL theorems like superposition, Norton, and Thevenin theorem. Already we have discussed, and the related problems are already solved by me. Okay, and you are also trying to solve the following problems by from the book StudyQ. Okay, I already provided all the books to all of you. Please find the attachment in the Google classmate section. Okay, and today is a special class because during the problem solving, I just omit the portion here, that is the sources, because I am only solving the problem by considering the independent source. Is it is it is it clear? Because during the problem solving, I am just using a battery source or DC source for the operation. Okay, according to that, I will solve the problem. But actually, sources are two types. Simply, if I divided into two portion, sources are divided into two parts. One is your dependent source, another is your independent source. Already in the previous classes, I already teach about how to use the independent source, how to solve the independent source, or what are the independent sources are possible. Now the main concern is, if in a system there will be a different dependent source, then how to solve it. Okay, there is two sources type. One is independent source and another is dependent source. Okay, and how many of you known about the how, what are the independent source we are taking for solving a problem? What are the, anybody can tell? What are the independent source we are considering to solve a problem, or a problem is asked? Current source and voltage Current source. source and voltage source. Very good. There are only two types of sources. That is, one is voltage source, or second one is your
current source. Already by using these two types of sources, uh, we already solved the problems. Okay, this is your independent source. I have already teach you like this. But what is the voltage source? This voltage source, okay, gives a constant across the terminal. Means the voltage sources. Suppose this is a voltage source, okay, and this is a plus or minus I am giving here. That means the voltage source is giving a constant voltage every time, and here the current source is also giving a constant current source in every time. Okay, that is the independent sources. Means these voltage sources and current sources are not dependent on any types of other parameters like your like I say branches or any other sources. Okay, but dependent source is totally dependent, means the voltage or currents are totally dependent upon other voltages or current source. Is it clear? That Yes, sir. means independent sources does not depend upon any source, does not depend upon any source. But this is dependent source. This is depend upon other voltage source, voltage or current. What are the dependent source present in the day-to-day life? Can anybody tell us? Tell me. How many types are dependent sources are present in the day-to-day life? Anybody can tell? Hmm. Resistor. No, register is not a source. Register is a parameter. Register is not a source. Here, the voltage source I am telling a independent source and current source is I am telling a, Capacitor. Capacitor. this is not a source. The DC source. Capacitor is not a source. Capacitor is a element by which we can energize the capacitor and the capacitor will work. Capacitor is not a source. Means it has not own source of energy. Means it cannot generate energy sources. But the DC source, this is a voltage source. This is a source by which you can connect to Sir, the transform circuit. means Transformer is a source, but this is also an independent voltage source. Here I am showing the dependent voltage source. Dependent sources are divided into four types. Like what I am saying the definition, these sources are depend upon other voltage and current sources. That means I can say one is your voltage controlled voltage controlled voltage source, current, sorry, again, voltage controlled current source, then again current controlled voltage source, current controlled current source. There are only four types of dependent sources present in the day-to-day life. One is your voltage controlled voltage source, voltage controlled current source, current controlled voltage source,
and current control current source. These four parameters or four sources we are generally used to define the dependent sources. Okay, that means a voltage source. This is a voltage source which is controlled by another voltage source, and this is a current source which is controlled by another current source. Is it another voltage source? Okay, current control voltage, sorry, current source. That means the current parameter or current sources is controlled by another voltage source, and it is how it looks like the sources. Like this is the example, this is the diagram of a control source. Okay, this is the diagram, and I can say this is a positive and negative. Okay, and this is a voltage source. If I defined it to a voltage source, I can term it as a uh, voltage controlled voltage source. That means I can say, suppose suppose 10 V1. That means your this is a voltage control. This is a voltage source. If I am giving a current source, that means you have to give a current source current direction. Then this is a positive or negative terminal, and this will be denoted as like this. This is a current control current source. Okay, is it clear, all of you? Tell me. These are the symbols we are using for the dependent source. This is the Sir, second symbol the ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ। Sir, କଣ? second symbol ଟା ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। This symbol. Yes, sir. This is a current control. You can see here. This is This is a symbol of a current because I am only giving the direction, right? And this is a symbol of a voltage. That means if I am giving a voltage source, this is a voltage source, normal voltage source plus or minus, I am giving a 10 volt. Okay, 10 volt, this is the unit, but this is a controlled voltage source example, and I am giving a source here. This is just 10 value I am giving to the C source, and this is a multiplication of V1 means I have to give some this voltage to control this circuit. That means this is a multiplication of the constant value with a controlled voltage source. Okay, and this is a multiplication of a constant value with a current source. Okay, and this is the maybe the direction is like this, maybe the direction is like downward. It is depend upon your question or depend upon your circuit diagram. Is it clear, Vibhuti? Yes, sir. Now coming to this person, I just dropped this person because I have to explain each sources individually. I just left this person because this is a different person. That's why this is a different sources. Okay, but these sources may be asked during the exam. By using these sources, how can you handle the problem? I will just explain. After explanation of the sources, I will go to the problem directly. You can analyze what are the differences between a simple voltage source and a dependent voltage source. Okay. In first part, I am just coming to this side. This is your voltage. I am already mentioned that voltage controlled voltage source. That means if this is my circuit, but this is my circuit, there are two terminals. Already we know that this is a plus or minus. This is suppose A terminal and B terminal. I am giving a voltage here, that is VAB. Is it clear? This is the input voltage. Okay, this is a system circuit model I have given here. Okay, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I'm obtaining a output, that is a voltage. Okay, because this is a voltage controlled voltage source. That means this voltage I am giving
this is a voltage control. This voltage I am giving to the circuit to control this outer voltage source. Okay, and it may be a dependent voltage source. The symbol is like this. This is a plus or minus similar to this. Okay, and I can term it as a CD. That is your VCD. Okay, that means the voltage VCD, that means your voltage VCD depends upon VAB. That means the voltage across CD depends upon the input voltage. Is it okay? If I am giving a voltage source and this is your output and the output is also a voltage source, that means I want to say that if you are giving a voltage source and you are obtaining an output voltage, that means this voltage source is control this voltage source. Is it okay? Is it okay, all of you? Yes, sir. Yes, If sir. I am giving a voltage source, then definitely if we control this voltage, so that means BCD depends upon VAB because this voltage source is totally dependent. Therefore, I termed it as a dependent source. Okay, that means the output voltage is dependent upon the input voltage. I can write down here. This is your VCD equal to mu VAB. That means this is a multiplication factor and this is your input voltage that depends upon that define your output voltage, and the mu I can compute it as a VCD by VAB, and this is a unitless symbol, and I can term it as a gain voltage. Anybody have doubt? No, sir. Please tell. Please tell. This is a simple output voltage and this is your input voltage. And as I mentioned that this output is depend upon this input voltage, that definitely this output have this is a multiplication factor. This input gives a multiplication factor by which the output is regulated. Okay, if I want to regulate the input to obtain an output, definitely I have to adjust the input voltage, and this is an adjustment factor. Okay, and if I calculate the adjustment factor, that definitely I have to divide these two voltages, and this is a unitless system. Okay, and its unit is nothing because this is a voltage and this is also a voltage. Now this is clear. I rubbed it out. Yes, sir. Okay. Now coming to the second point. Second, just I here second point. Otherwise, I just drop it out. Okay. Voltage control current source. That means I am same system I am taking. This is your system, and I am giving a voltage input to the system. This is your voltage input, and this is your VAB, and I am giving a output that is your current source. That means I am giving an output that is your current source. This is your CD. Okay, this is your ICD. Okay, means your voltage controls your current. I can write here ICD depends upon VAB. Yes or no?
Tell me. Yes, sir. Yes, sir. Now, coming, if I obtain an equation, ICD is equal to GM VAB. This is also a constant, but the M is denoted as your mutual path or mutual inductance concept, and G is your constant. And I know this is your GM. If I am calculating your GM, that is your ICD by VAB. Then please tell me what is GM. This is your GM is your trans conductance. What is denotes as a trans conductance? If you have a current output and the ratio between the current output and the input voltage, that is known as your trans conductance. You know about the conductance. What is a conductor or what is your conductance? If I define a conductance, suppose this is a conductance. Conductance, if I define the conductance is the reciprocal of resistance. Conductance is the reciprocal of resistance. And what is the unit of a conductance? That is your unit is your mho, MHO. ओम्स लॉ, ओम को मतलब उल्टा क्या अगर लिखूंगा तो इसका यूनिट क्या बनेगा? कंडक्टेंस. कंडक्टेंस इज इक्वल टू मो. इसका सिंबल है कंडक्टेंस is defined as this is your reciprocal of your resistance. If in a question you have asked and given a resistance, so your resistance is 5 ohm. If the question asks you to find out the conductance, then definitely you have to reciprocate the resistance. That means 1 by 10. That is your conductance. Conductance is your defined as a mho, MHO. And similarly, M is the mutual inductance factor, and GM is denoted as a trans conductance. And if you have a output current and the ratio between the output current and the input voltage, that is known as your trans conductance. Because you can see here, if I divide it and break these parts, then definitely the VAB is I something current into the resistance. Maybe the current cancel, then it is also similar to 1 by R. But if I denote the current terminal as well as divided by the voltage terminal, then definitely this is the term as a trans conductance. This is the difference between conductance and trans conductance, and the unit of trans conductance is Siemens. डाउट किसका बोलो? सर जीएम किस ले लिए सर? जीएम इज ए कांस्टेंट. ये सिर्फ डिनोट करने के लिए फैक्टर है और ट्रांस कंडक्टेंस को डिनोट कर रहा हूं जीएम से. जैसे कि हम लोग वोल्टेज को V से डिनोट कर रहे हैं, इससे ट्रांस कंडक्टेंस का सिंबल है जीएम, इसीलिए मैं जीएम लिया. वहां पर मैं क्या लिया था? जो वोल्टेज में लिया था म्यू फैक्टर. Mu is voltage gain, and similarly here the GM is your trans conductance factor. Is it okay? यस सर. Conductance and trans conductance, everybody clear this portion? Girls, आप लोगों का क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? Yes, sir. हेलो. Yes, sir. ओके, थैंक यू. ये जो पार्ट हुआ कंडक्टेंस एंड ट्रांस कंडक्टेंस, ये आप आ सकता है जब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा ना, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा कि कंडक्टेंस का मतलब यूनिट क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, ये सब याद रखना पड़ेगा.
मतलब जहां पर करंट और वोल्टेज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और करंट डिवाइडेड बाय योर वोल्टेज में कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली दिस इज नोन एज योर ट्रांसकंडक्टेंस, because this is a reciprocal of also resistance, but I termed it as a transconductance. But the conductance is the simple definition. Conductance का क्या होगा? Reciprocal of resistance. ये मतलब सुनने में याद रह जा रहा है, मगर जब काम करेंगे इसके ऊपर तो थोड़ा सा हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको डेफिनेटली आप नोट डाउन करके रखिए कि कंडक्टेंस और ट्रांसकंडक्टेंस का यूनिट क्या है और उसके बीच में डिफरेंस क्या है, राइट? Now I am coming to the next part, that is your third number, and this is a current controlled voltage source. That means same type, there is a plus or minus. This is a current source IAB, okay, and this is a voltage source plus minus, okay, CD. Similar diagram here, input is this much and the output is this much. Okay, that means I can term it as your IAB because this is short circuited path and I have calculated the open circuited path before. This is a short circuited, means the current path I am calculating. This is your IAB. That means this is your voltage. Current controlled, that means current source is the input and the voltage source, this is the output voltage. That means VCD depends upon IAB. Is it okay or not? That means your output voltage depends upon your input current. Is it okay or not? Yes, sir. Now, coming to this equation, this is your output voltage VCD is equal to, I am just giving a constant Rm. Rm is used for the mutual, okay, Rm, and this is your IAB, and here if I am calculating the Rm factor, that is your IAB divided by BCD, and M is denoted for mutual, and Rm is your what? Trans resistance. सर ओके, हाँ, ये सर उल्टा हो गया ना, आईएबी उधर जाएगा तो वीसीडी बाई आईएबी होगा ना। ओके ओके, सॉरी, ये आपका उल्टा हो गया क्योंकि मैं आउटपुट इज डिपेंड अपॉन योर इनपुट, सॉरी, IAB, this is your input, IAB by BCD ना, yes, your output BCD equal to RM by IAB. This is right. Okay, this is right, and this is the M is your mutual, and this is your voltage by current. Already in the voltage controlled current source में हम लोग current by voltage निकाले थे, ये आपका हो गया voltage by current, and you can see here RM is denoted as your trans resistance. When your output voltage divided by your input current ऐसा condition आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस रेजिस्टेंस, and इसका यूनिट सेम as your resistance, that is your ohm. Okay, clear? Is it clear? यस सर। Your output voltage, ये रिलेशन आएगा किसके साथ? क्योंकि आपको ये कंट्रोल कर रहा है, IAB कंट्रोल कर रहा है,
तो आईएबी को कंट्रोल कैसे करेंगे? एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस रेजिस्टेंस, एंड इसका यूनिट क्या है? ओम। और हम लोग को तो पता है रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं, ये अपोज करता है करंट का फ्लो को। इसका भी यूनिट क्या है? ओम है। मगर ट्रांस रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ट्रांस रेजिस्टेंस कब आएगा? जब आपका आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय योर इनपुट करंट होगा, तो इट इज डिफाइंड एज ए ट्रांस रेजिस्टेंस। ओके, इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. नेक्स्ट जाए अभी। English. What? Tell me. That means here सेम एक सिस्टम होगा, ऐसा टाइप का सिस्टम जहां पर आपका इनपुट देंगे आप करंट, और ये आपका प्लस और माइनस रहेगा करंट। ये आपका आई ए बी, सपोज ए एंड बी। आउटपुट भी आपका वही होगा, सी डी, राइट? तो ये आपका सी डी होगा प्लस और माइनस, दिस इज ऑल्सो प्लस और माइनस। ये आपका क्या हो जाएगा? आई सी डी। दैट मीन्स योर आई सी डी डिपेंड्स अपॉन IAB. Okay, ICD which depends upon IAB. तो इसका फैक्टर क्या रहेगा? ICD इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन किसको कंट्रोल करना होगा? इनपुट को। तो इसको मैं कैसे करूंगा? बीटा से डिनोट करूंगा, और ये है IAB, दैट इज योर बीटा इज इक्वल टू ICD and divided by IAB, and this is also unitless, and it is known as your what? Beta is known as your current gain। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स एंड करंट कंट्रोल करंट सोर्स। दैट मींस योर सेम voltage I am giving to control a voltage source, and here I am a current giving to control a current source. Therefore, this is the factors are depend upon the gain. That is maybe here voltage control voltage source, that is a voltage gain. Okay, and this is your current control current source, that is your current gain. Okay, required to control this voltage. Current gain is required to current gain is required to control a current source, and here a voltage gain required to control a voltage source. Okay, बट ये दो फैक्टर में मुझे एक फैक्टर मिला वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, जहां पर करंट आउटपुट निकलेगा, तो वो वोल्टेज हम लोग इनपुट दे रहे हैं, तभी इसका किसके फैक्टर पे डिपेंड करेगा? ये जब हम लोग वोल्टेज गिवन कर रहे हैं, करंट आउटपुट आ रहा है, तो ये कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करेगा? वेरी गुड, दिस इज ए ट्रांस कंडक्टेंस के फैक्टर पे डिपेंड करेगा। और इसको हम लोग कैसे डिनोट कर रहे थे? डिनोशन कैसे कर रहे थे इसका ट्रांस कंडक्टेंस का? साइमन से। हाँ, साइमन। और इसका डिनोट कैसे कर रहे थे, मतलब कौन से फैक्टर से? GM, ये आपका फैक्टर। Okay, and M is written for the mutual factor or mutual inductance. Okay, and here current control voltage source जो लिखा हूं, तो ये कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करेगा? ट्रांस रेजिस्टेंस, RM, ट्रांस रेजिस्टेंस। बिकॉज आपका इनपुट है करंट सोर्स, आउटपुट है वोल्टेज सोर्स, तो ये क्या करेगा? वोल्टेज बाय करंट, दैट मींस वोल्टेज इक्वल टू I into R, and I कैंसल, दिस इज आल्सो ए रेजिस्टेंस। बट जहां पर वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय करंट सोर्स आएगा, ये सॉरी, जहां पर करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है ना, तो जहां पर ये वाला फैक्टर आएगा वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय करंट सोर्स आएगा, मतलब आउटपुट ही बाय इनपुट आएगा, आउटपुट वोल्टेज सोर्स एंड करंट इनपुट होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रांस रेजिस्टेंस, एंड इसका यूनिट होगा ओम।
ये चारों टाइप का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स का एग्जांपल था जो आपको मैं समझा दिया। अभी आप बोलिए कि इसमें और क्या डाउट है। अगर डाउट कुछ नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम में जाएंगे। इसी के ऊपर थ्योरी इतना ही था। बोलिए। सर सर करंट गेन और एक बार समझा दीजिए। इसका ये लास्ट वाला नो सर, करंट कंट्रोल करंट सोर्स का। करंट कंट्रोल करंट सोर्स का तो हाँ करंट सोर्स। हाँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं, एक इनपुट करंट सोर्स गिवन दे रहे हैं। इनपुट को मैं टर्मिनल को डिनोट किया ए एंड बी से। ओके एंड दिस इज द शॉर्ट सर्किटेड पार्ट, दैट मींस आई एम गिविंग द करंट सोर्स हियर। इज इट ओके? यस सर। हाँ। अभी आउटपुट में कौन आ रहा है? आउटपुट में भी वही करंट सोर्स आ रहा है, मगर ये आपका क्या है, कंट्रोल करंट है। मतलब ये आउटपुट जो करंट सोर्स आ रहा है ये डिपेंड कर रहा है आपका इनपुट के करंट के ऊपर। ओके दैट मीन्स योर ICD it depends upon IAB. ICD means performance of the output depends upon your input. That means I can write down ICD। हम लोग किसको रेगुलेट करेंगे? करंट को रेगुलेट करेंगे। तो इनपुट करंट को, दिस इज ए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दैट इज डिनोटेड एज ए बीटा। इफ आई फाउंड द बीटा अमाउंट, दैट मींस आपको कितना करंट मॉडिफाई करना चाहिए और कितना परसेंटेज ऑफ करंट आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये बीटा फैक्टर कैसे निकालेंगे? ये आपका आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय योर इनपुट करंट, देन ओनली वी कैन गेट द करंट गेन, that is your beta। Is it clear? यस सर। Okay. Now coming to a simple problem. Already we discussed about the mesh analysis problems. Okay, but here हेलो yes, सर, और एक बार वो जो आई डी इज इक्वल टू बी इंटू आई ए बी समझ नहीं पाया मैं, करंट गेन को। कौन सा इसको हाँ सर। क्यों कहाँ पर डाउट आ रहा है? बोलिए। सर जो आई डी इज इक्वल टू बी आई ए बी का पर डाउट है। देखो ये आपका आई जो डी है, ICD है यहाँ पर, ठीक है। CAD है, ICD करंट यहाँ पर आउटपुट करंट, एंड IAB इज योर इनपुट करंट, राइट। हाँ सर। तो ये ICD ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? इनपुट के ऊपर। यस ये सर। IAB के ऊपर डिपेंड करेगा। यस सर। तो ये जो फैक्टर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बीटा, तो इसका यस सर। मतलब क्या है, IAB को मैं कंट्रोल करूंगा इसी फैक्टर के हिसाब से। यस सर। जब हम लोग इनपुट को कंट्रोल करेंगे तभी जाके तो ये आपका आउटपुट करंट सोर्स आएगा। तो यस सर। इनपुट को कैसे कंट्रोल करेंगे? एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसमें, तो बाय यस विच सर। यू कैन कंट्रोल द आउटपुट। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? बीटा इज इक्वल टू योर आउटपुट इज योर ICD डिवाइडेड बाय योर IAB। यस इज सर। इट क्लियर? यस सर। तो ये आपका करंट, इसको मैं बोल रहा हूँ करंट रेट। सिमिलरली जो प्रीवियस कंडीशन में मैं निकाला था उसी का ये एक रिलेशन है, सिमिलर टाइप। ओके यस सर। now coming to a simple mesh analysis problem by using your controlled or dependent voltage source। इसको हम लोग कंट्रोल वोल्टेज सोर्स या कंट्रोल करंट सोर्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में भी ये भी पूछ सकता है। आपका क्वेश्चन है ऐसा, आप लोग इसको हेडिंग दे सकते हैं, मेश एनालिसिस विथ डिपेंडेंट ओके। तो ये सर्किट आप बना लीजिए पहले।
आपको यहां पर करंट फाइंड आउट करना होगा, कहां पर, यहां पर फाइंड I20 ओम। ठीक है, कौन इसको सॉल्व कर पाएगा? बोले, बॉयज में से कौन कौन कर पाएगा? सर सर ये करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है क्या? हाँ, करंट कंट्रोल, क्यों? यहाँ पर करंट गिवन है, करंट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो ये करंट कंट्रोल एक वोल्टेज सोर्स है, तो ये आपका है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। वेरी गुड। ये मेश एनालिसिस से सॉल्व करना होगा, कर पाएंगे? ये पोर्शन आपका जो मिड सेम एग्जाम, जो इंटरनल एग्जाम में नहीं आया है, राइट? इसको सिर्फ उसके बाद आएगा, ये इंटरनल एग्जाम में ये पोर्शन नहीं आया है। कौन कौन इसको कर पाएगा? ट्राई कर सर रहे इसमें I1 नहीं दिया हुआ है, I1 चाहिए होगा ना? आएगा? हाँ वो जो 10 I1 है, तब हमारा वोल्टेज I1 क्या? वो फाइंड ठीक है, करना मैं एक पड़ेगा ना? प्रॉब्लम आपको करवा देता हूं। देखिए, मेश एनालिसिस में हम लोग का पहला काम क्या है? मैथ फाइंड करना। वेरी गुड। पहला पॉइंट होगा आपका फाइंड द मेसेज प्रेजेंट, मेश और लूप प्रेजेंट इन द सर्किट। तो यहां पर कितना मेश पॉसिबल है? 2। वेरी टू गुड। सर। दो, दो, ये एक होगा, ये एक होगा। हाँ, यहां पर मुझे करंट गिवन है, करंट का वैल्यू गिवन है, इसका मतलब I1 गिवन है। ठीक है, तो इसको मैं I1 और I2 अगर मैं प्लेस करूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 10 I1 गिवन है, मैं इसको I1 लूं या इसको I1 लूं, ये कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, राइट? तो इसकी इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर दोनों I1 I2 क्या है, एक वेरिएबल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, Ix लिखूंगा, यहाँ पर Iy लिखूंगा। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, यहाँ पर X करंट जा रहा है, यहाँ पर Y करंट जा रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? यस लिख सकते हैं। लिख सकता हूं। तो आपका पहले जब ये मेश फाइंड आउट हो गया है, अभी मैं यहां पर देखिए, यहां पर दो लूप फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड पॉइंट में हमारा 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 काम क्या है? तो फाइंड द इक्वेशंस। ओके, फाइंड द लूप्स। ओके, तो फर्स्ट लूप, सपोज दिस इज योर ए बी सी एंड डी। दिस लूप के बारे में मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर करंट मेरा Ix फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर अगर मेरा Ix फ्लो कर रहा है, तो आपको पहले साइन कन्वेंशन डिनोट करना पड़ेगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, क्योंकि बिफोर साइन कन्वेंशन यू कैन नॉट सॉल्व the equations or cannot calculate the equations appropriately। तो यहाँ पर देखिए, करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे लिए हैं? क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन ले रहे हैं। ये हम लोग सभी प्रॉब्लम में क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मैं ले रहा हूं, तो ये वाला पार्ट आप लोग देखिए, करंट ये रजिस्टर में यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। ये यस और नो? करंट आपका ए एंड बी पॉइंट पे जा रहा है, तो करंट यहां से इन कर रहा है और यहां से आउट कर रहा है। तो जहां से इन करेगा उसको मैं पॉजिटिव साइन दूंगा, जहां से आउट करेगा उसको मैं नेगेटिव साइन दूंगा। इज इट क्लियर? मैं अभी साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ पर पॉजिटिव दूंगा, यहाँ पर नेगेटिव दूंगा, राइट? नाउ करंट इज एंटरिंग फ्रॉम बी टू सी लाइक दिस। दैट मीन्स फॉर लूप वन द अपर पर्सन इज, अपर से ऊपर से करंट इन कर रहा है और आउट कर रहा है नीचे से, तो ये हो जाएगा आपका प्लस और माइनस, राइट?
तो ये जो वोल्टेज सोर्स है उसका उसको उसी ही अंदाज में रखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो गिवन है इसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मगर करंट का डायरेक्शन के ऊपर ये प्लस और माइनस हो सकता है, राइट। तो अभी मैं बोल सकता हूं अप्लाइंग केवीएल द फर्स्ट लूप, अप्लाइंग केवीएल इन द फर्स्ट लूप, मतलब ए बी सी डी, तो क्या होगा इक्वेशन, कौन बोल पाएगा, बोलिए। 10 minus 5 I1 5 ix आई एक्स minus 10 minus whole into ix minus iy हाँ, equal to 0 और ये minus I minus 10 minus i 10 I1. i1 equal to 0. इट राइट, सभी का गर्ल्स आप लोग का भी इसमें सहमत है या नहीं है, ये जो इक्वेशन, यू आर एग्री विथ दिस इक्वेशन, सर Yes, माइनस sir. 10 कैसे हुआ सर? ये जो -10 है इसमें डाउट, हाँ सर। तो ये तो करंट ऊपर से आ रहा है ना, यहाँ पर इसी लूप के बारे में अभी बात कर रहा हूँ, तो ये करंट तो ऊपर से नीचे तक आएगा ही ना, हम्म। तो इसका ऊपर से नीचे तक आएगा मतलब प्लस से माइनस करंट आएगा, तो क्या हो जाएगा, हाँ यस सर 10 I1 हाँ। क्लियर, सभी का गर्ल्स आप लोग का क्लियर हो रहा है, ये वाला इक्वेशन से आप लोग एग्री है, ओके नेक्स्ट, 10 minus 5ix, ये आपका हुआ इक्वेशन, राइट। अभी सेकेंड वाला लूप को मैं जाता हूं, ये वाले लूप में क्या होगा आप बोलिए, सेकेंड लूप का क्या होगा इक्वेशन, minus 20 I1 अप्लाई केवीएल लूप 2, और ये क्या है आपका बी सी डी एफ, ओके, हाँ बोलो अभी इक्वेशन, 10 i1 विजिबल नहीं हो रहा है क्लियर से। नहीं आ रहा है क्लियर से, so 10 i1 ओके 10 i1 minus 10 whole into iy minus ix 10 into iy minus ix minus 20 iy minus 20 equal to 0. सभी का ये आ रहा है गर्ल्स आप लोग का, यस सर। ओके, तो यहां पर देखिए आपका कितना वेरिएबल्स है, देखो ये इक्वेशन 1 तीन 3 sir. 3 वेरिएबल है, 3. तो 3 वेरिएबल है, मेरा 2 लूप है, तो एक एडिशनल वेरिएबल है यहाँ पर, राइट। तो ये एडिशनल वेरिएबल कौन है, आपका I1 I1 है, देखो करेक्ट क्वेश्चन में गिवन था, ये व्हाइट कलर में जो मार्क किया हूं I1, हाँ कि नहीं, ये 5 ओम के एक्रोस में मैं I1 मार्क किया हूं यहाँ पर, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन अभी सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन डिराइव करूंगा, कौन सा इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन, देखो यहाँ पर 10 I1 यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स में लिखा गया है, करंट का सोर्स में 10 I1 लिखा गया है, राइट। तो ये I1
मैं गिवन किया हूं क्वेश्चन में इस साइड में, इसका मतलब क्या होगा? तो ये वाला जो करंट फ्लो कर रहा है इसी में, इसी सर्किट में, तो ये I1 इसके साथ इक्वल होगा। समझ पाए क्या मैं बोल रहा हूं? Sir, again. Yes, sir. देखो यहां पर आपका I1 गिवन है, 10 I1 गिवन है कि नहीं क्वेश्चन में? बोलिए Yes, sir. यस और नो। Yes, sir. तो ये Yes. अगर 10 I1 यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर मैं एक मार्क किया हूं, देखो I1 का क्वेश्चन में पहले से मार्क किया हूं, ये व्हाइट वाला I1 ये 5 ओम में फ्लो कर रहा है, राइट? तो इसका मतलब ये दोनों Yes. करंट बराबर हुआ। I1 में मार्क कर दे रहा हूं यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर जितना करंट फ्लो होगा ये 5 ओम में, यहाँ पर भी वही करंट फ्लो कर रहा है I1। इज इट ओके? Yes, sir. अभी मैं एक बात कर रहा हूं कि ये 5 ओम में हम लोग जो लिए हैं कन्वेंशन, जो हम लोग जो लूप लिए हैं, तो ये 5 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है? IX। Ix। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो Ix करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है और जो I1 करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir। Yes, sir. होगा, होगा। तो अभी मैं Yes, लिख sir. सकता हूं योर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूटिंग I1 इक्वल टू Ix लिख सकता हूं। जो मैं करंट लिया हूं यहाँ पर, ये छोटा वाला है, यहाँ पर मैं सिर्फ बड़ा डिनोट कर दे रहा हूँ, तो आप लोग उसी हिसाब से बड़ा छोटा मैं कर दिया हूँ, या आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए I1 इक्वल टू Ix की बराबर होगा, मतलब ये जो I1 करंट यहाँ पर लिखा हूँ, तो यहाँ पर I1 में डिवाइड किया हूँ, मतलब ये आपका Ix की बराबर होगा, क्योंकि मैं जो लूप लिया हूँ ये I1, ये यहाँ पर भी Ix करंट भी फ्लो कर रहा है और यहाँ पर I1 करंट गिवन। इज इट ओके? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हम आप लोग पुट करिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका? इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा -15, 15 है माइनस, यहाँ पर उसको ऐड कर लीजिए आप लोग, 10 माइनस 5ix माइनस 10ix प्लस 10iy माइनस 10, कितना होगा ये? 10 ix होगा। minus ठीक है, ix 25 की IX. जगह में क्या पुट किया हूँ? ix। तो ये अभी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका इक्वेशन में कौन सा फैक्टर वेरिएबल, कितना वेरिएबल अभी रहा? 2 वेरिएबल। और यहां पर भी आप लोग इसी थर्ड का इक्वेशन को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन? तो आपका यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा। तो ये इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूं बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 10i1 माइनस 10 या iy प्लस 10ix माइनस 20 iy इक्वल टू, सॉरी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये 10i1 की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं इसको? आपको पता है यहाँ पर i1 इक्वल टू ix, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ix लिख सकता हूं। होगा कि नहीं होगा देखिए। सर वो इक्वेशन आधा कट गया है स्क्रीन में। लास्ट में कुछ नहीं है, -20 इक्वल टू 0 लिखा हूं। -20 तक दिख रहा है तो यस सर। Yes, sir। -20 इक्वल टू 0 लिखा हूं। ठीक है, तो अभी आपको क्या मिल गया? 2 इक्वेशन मिल गया। तो यहां पर आप ix और iy निकाल सकते हैं ये इक्वेशन से, और है कि नहीं? ये आपका एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन,
और इस इक्वेशन से आप ix एंड iy निकाल सकते हैं. तो find by solving these two equations you can find out your ix. IX 0.18 Okay, 0.18 and iy minus 0.54. माइनस 0.54. ये आप लोग चेक करेंगे. मैं इसका कैलकुलेशन नहीं किया हूँ. आपका फ्रेंड जिस हिसाब से बोल रहा है मैं इस हिसाब से लिख दिया हूँ. 0.18 एंड आपका आई वाई आ रहा है 0.54 एम्पियर. दैट मीन्स कैन यू फाइंड आउट द I20. इस जो क्वेश्चन पूछा है इसके अक्रॉस में करंट कितना होगा बोलिए आप लोग. 20 IY. करंट पूछ रहा हूँ 20 IY कैसे होगा. मतलब सिर्फ ये I20 जो होगा ये IY के बराबर होगा. अगर ये आप बोल रहे थे तो राइट है. यहाँ पर जितना करंट सर. जाएगा तो इक्वल यहाँ टू हाँ ये आपका इक्वल टू IY होगा. यस. तो इसका मतलब I20 जो होगा करंट का वैल्यू जो जहां पर पूछा हूं यह आपका किसके बराबर हो जाएगा. इक्वल टू माइनस 0.54 एम्पियर. अगर इसका मैं पूछूं कि डायरेक्शन कैसा होगा जो हम लोग डायरेक्शन दिया है ठीक उसके अपोजिट होगा अगर मेरा माइनस सिंबल आता है. इज इट ओके. Yes, sir. Yes, sir. देखिए सभी का क्लियर हो रहा है. ये वाला पार्ट सभी का क्लियर हुआ. ये वाला पार्ट कुछ नहीं करना है. जहां पर ये तीन प्रॉब्लम इसमें मैं सॉल्व कराऊंगा डिपेंडेंट सोर्स में. ठीक है. और तीन प्रॉब्लम में टोटल मेश का हो गया. आपका जो वोल्टेज सोर्स अगर होगा यहाँ पर वोल्टेज होगा तो उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं एक प्रॉब्लम. और दूसरा एक प्रॉब्लम होगा सुपर मेश का कंसेप्ट. ये तीनों प्रॉब्लम में टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा ये सेक्शन. Right? So dependent source is also very much important for your exam purpose. That's why I just after completing the normal procedures or normal theorems values and normal by giving an independent source values, here I am giving a dependent source. By giving a dependent source, how to solve a problem, this is the procedure, full procedure I am giving. Is it okay? All of you clear? Yes, sir. Yeah, doubt. Yes. If anybody have any doubt, please ask me. I will solve. Otherwise, I will close this session. Yeah. No, sir, no doubt. No doubt. Guys, आप लोग का नहीं है? No, sir. Okay. Okay. Then thank you all. हम लोग कल फिर मिलते हैं और एक वेराइटी Thank you, sir. हाँ Thank वेराइटी you. प्रॉब्लम Thank you, के. sir. थैंक यू. थैंक यू सर. प्लीज आप लोग लीव हो जाइए क्योंकि नेक्स्ट Thank you, क्लास sir. होगा अभी. हाँ थैंक यू.